परफेक्ट, डन। आई थिंक सो एवरीबडी हैज कम। दो तीन लोग नहीं आ पाए, आ जाएंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ज्वाइन हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ या सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज, हमारा टॉपिक है हाउ एंशिएंट ऋषिज प्रैक्टिस मेडिटेशन। ओके, सो लेट्स हैव इंटरैक्टिव सेशन एंड देन आई शो यू कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज मेडिटेशन? You can just answer me on the chat box. Everybody can answer. I think so. I've given. What do you mean by meditation? आपके हिसाब से meditation क्या है? What do you mean by meditation? If I ask you one question, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि मेडिटेशन क्या है, आपका क्या जवाब है? फोकसिंग ऑन सेल्फ, ओके ठीक है। एंड फिर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, ओके। और जल्दी से फोकसिंग ऑन सेल्फ मतलब खुद पे ध्यान देना, सेल्फ अवेयरनेस, ओके। और जल्दी से, बहुत लोगों को पता है ये, इसके लिए जल्दी से आई वॉन्ट एवरीबडी टू जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट डू मीन बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है? 10%, 20%, 30%, 40%? स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन का क्या रोल है? अलाइनमेंट ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, ओके ठीक है, वेरी गुड। Getting cosmic energy to grounding to, okay, very nice। and superb, बहुत लोग सही जा रहे हैं, excellent। one more answer, one or two more answer। आपके हिसाब से what is meditation, what is the role of meditation in spirituality? okay, second question, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। second question is how do you do meditation? meditation कैसे करते हैं? how to do meditation, okay, focusing on breath, okay ठीक है। और See, understand one thing. I'll talk in both the languages so that सभी को समझ में आएगा। मैं दोनों भाषाओं में बात करता हूँ या करूंगा। एक होता है मेडिटेशन करना और एक होता है मेडिटेशन में जाना। One is doing meditation, one is going into meditation. We do meditate, that's why we don't go into meditation. Understood मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तो मेडिटेशन करना, एक मेडिटेशन में जाना। नॉर्मल इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दे try to do meditate, that's why they can't meditate or they don't get the effect of meditation। हिंदी में मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, इसके लिए इतने सालों तक भी करते हैं, इसके लिए उनको इफेक्ट नहीं आता। एंशिएंट ऋषिज, they don't do meditation, they go into meditation। okay, they go into meditation। तो हमें भी क्या करना है? वी हैव टू गो इनटू मेडिटेशन, वी डोंट हैव टू डू मेडिटेशन। ओके, सो हाउ डज द ऋषि मुनि, okay, start with the meditation? okay, there are three steps, three or four steps। first important thing, they always start their process, their day, okay, very early in the morning। okay, बहुत जल्दी मॉर्निंग में स्टार्ट करते, बिटवीन 3:15 and 6। ओके, 3:15 से 6 बजे के बीच में वो अपनी साधना प्रतिक्रिया स्टार्ट करते हैं। उनका 90% ऑफ वर्क, ओके, मेंटल वर्क इज बीन फिनिश्ड बाय 9 o'clock, 10 o'clock। एंड एग्जीक्यूशन 10 बजे के बाद चालू होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ऋषि मुनीज होते हैं या जो सिद्ध गुरु होते हैं ना, उनका 80-90% ऑफ वर्क सुबह 9 बजे तक खत्म हो जाता है। उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन होता है, पूरा प्लानिंग, माइंड का साधना, स्पिरिचुअल साधना, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड बिफोर 9 o'clock। ओके, नाउ साधना डजंट मीन ओनली मेडिटेशन। साधना का मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन है। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ योगा, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रेथ, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ साउंड। ओके, सब मिक्सचर combined is the sadhana, is the yoga। so if you talk about योग का मतलब यही नहीं है कि only physical thing। the meaning of yoga is not, that doesn't mean that you have to do only physical activity। okay, your activity should be mixture of mental, emotional and physical both। okay, तो मन शरीर आत्मा, मन शरीर आत्मा का
शुद्धिकरण, उनका अलाइनमेंट. ओके, सो वॉट एवर एंशंट ऋषि डस, ओके, ओके, all the Vedas which has been written, na Vedas, all the Vedams, all the sounds, cosmic sounds, 72,000 sounds, okay, all the knowledge of chakras, all the knowledge of nadis, जो भी nadis का knowledge है, चक्र का knowledge है, वो बुक में नहीं लिखा है. ओके, वो साधना से ऑटोमेटिकली उनको डाउनलोड हुआ है. दे हैव डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली through the sadhanas. Okay, so there is a mixture of mental, emotional, physical. So what I say, there is a mixture of your breath exercise, there is a mixture of cosmic sound, there's a mixture of certain yoga asan. Okay, and finally, during this process of all these things, automatically they go into meditation. Now there are certain rules and regulations. Which rules and regulations does they follow? Okay, what they does, okay, what they do actually, वो क्या करते हैं? Whenever they get up early in the morning, कभी भी उठते, whenever they get up early in the morning, they first take a bath, स्नान करते हैं. Okay, they do the bathing, shower. Okay, okay, first and the most important thing what they do is whenever they get up, okay, I'm not talking about basic things what they do, I'm just talking about the important things. Okay, मैं important things बात करूंगा, basic things करूंगा तो बहुत लंबा चलेगा. First and the most important thing, they start with the bathing. Okay, bathing before even drinking water, they first bathe. By bathing, see, whenever you are sleeping, okay, जब भी आप सोते हैं, cells है ना, cells dead हो जाते हैं, dead. Okay, your cells become very dead. So to activate the cells, very important, to activate the cells, they bathe. Now they bathe without any soap, just with the water. Which water? Tap water. जो नल का पानी है उससे वो स्नान करते हैं. पहला सिर पे डालते हैं, फिर शरीर पे डालते हैं. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पानी आप शरीर पे डालोगे, if you put the water directly on the body, the heat will go on the brain, which is not good. Okay, तो अच्छा नहीं है. So you should always start bathing with putting water on the head first and then with the body. So important thing. Say they hardly take 5 to 10 minutes to breathe, maximum 5-7 minutes to bathe. They come out. Okay, उनका जो भी कपड़े हैं वो पहनते हैं. Second, they light a diya always in front of them, which is the second step they do. They light a diya, okay, front of them. Okay, they light a diya with the coconut oil or with the ghee. Most important, powerful oil is the coconut oil, and if you don't have original coconut oil, you can take the second alternative option, जो कि घी है. तो पहला ऑयल है, सेकंड घी है. तो वो दिया लगाते. वाई दिया? बिकॉज इवन इन ब्रह्म मुहूर्त जो डिस्टर्बेंस कम होता है, बिकॉज अदर सोल्स इतने एक्टिव नहीं होते इन द मॉर्निंग. They are very sensitive, so they don't want any other energy to interfere in what they think, because बहुत clarity of thoughts होनी चाहिए. जब आप सोचते हैं, see, please understand one thing very important. Whenever you're thinking something in the morning, not necessarily it is your thought. It can be many people who are surrounding you which are invisible, or maybe souls. Okay, at your place, outside, wherever. इवन इफ somebody is thinking about you, वो भी डिस्टर्ब करता है, उनके भी थॉट्स आपको आते हैं. सो यू डोंट वांट एनी अदर थॉट्स, पीपल थॉट्स, दूसरे किसी के भी थॉट्स शुड कम इनसाइड यू. ओके, जिससे आपकी क्लैरिटी ना मिले, अदरवाइज यू विल नॉट गेट क्लैरिटी. सो लाइटिंग द दिया इन फ्रंट ऑफ यू क्या करता है? एक सर्कुलर चीज तैयार करता है, विच इज कॉल्ड एज कवच. सो वेरेवर यू सिट and if you light the diya in front of you, एक circular कवच तैयार करता है. तो not any other energy can disturb you. Okay, can manipulate your mind. Okay, can manipulate your thoughts. So जो भी thoughts आएंगे वो आपके thoughts आएंगे, दूसरे के thoughts नहीं आएंगे. So whatever thoughts are there, it will be your thoughts, not other people thoughts. ठीक है, समझ में आया? So सुबह उठे, फ्रेश अप हुआ, स्नानम किया, नॉर्मल कपड़े पहने, ओके, दिया लगाया. Second, any asan, they place any asan. It can be any cloth.
wherever they sit, they put a cloth. It can be a cotton cloth or any other cloth. You can put it any color, whatever you like. Important thing is whenever you meditate or do sadhana or do om chanting or any other sound chanting or breathing process, there is an energy which is created, prana energy, and there is a possibility it can go down from the Muladhara. ओके निकल जाता है ओके एंड इफ इट इज टचेस टू द मदर अर्थ अगर मदर अर्थ है तो मदर अर्थ में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है मदर एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो वो खींच लेगा सो इफ यू वांट टू प्रिजर्व इट ऑलवेज प्लेस अ क्लॉथ बिलो वेर एवर यू सेट ठीक है समझ में आया ओके बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपने सुना होगा यू माइट हैव हर्ड अ सर्टेन पेंटिंग्स आर सेल worth $1 million, $2 million, or Gandhiji specs, sold for 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, I don't know, or there are certain coins. Why? Because there is a storage of energy, which is very important. So whatever you do, even the cloth as energy, if you meditating for certain period of time with one cloth, वो cloth के अंदर भी वो energy चली जाती है. Okay, understand? Because our body is made up of 5 elements. The pura Srishti is made up of 5 elements. So whatever you do, okay, it get inside you. Okay, so even the kapra, even the specs, if you are wearing, even the chain, even the bangles, whatever, वो energy उसके अंदर चली जाती है. Okay, that's why I tell you, unnecessary. This is my experience. Unnecessary. जो people who are a multi-millionaire, billionaire, okay, so they don't give their clothes to anybody like that, okay, and they don't wear second-hand clothes, okay, they always buy fresh clothes, even if it's cheap or costly, nahi, okay, even they don't use other vessels, even they don't use other glasses, okay, very important. अगर आप दूसरे का ग्लास लेते हैं नो प्रॉब्लम यू नीड टू नो दैट उनकी एनर्जी कैसी है so they are very spectacular so they don't even eat in other people's plate so it's very important okay I'm not saying it's good or bad there's a transfer of energy so if you don't know what is other people's energy don't try to wear other people's clothes or something like that okay आई हैव सीन दैट बहुत से लोग तो कपड़े भी 2-3 बार पहनते फिर रिपीट नहीं करते you might have seen that right there's a reason for that okay so even if you are sleeping आप सोते भी है तो बेड पे चद्दर है ना there is a चद्दर on your bed you put the uh, cloth on your bed before you sleep that also contains energy even the person who is sitting sleeping besides you very important that's why I always tell never put a glass of water besides you when you are sleeping पानी का ग्लास कभी साइड में नहीं रखना चाहिए जब आप सोते हैं बिकॉज आप जो भी सोचते हैं वॉट एवर यू थिंक वाटर इज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट अवर बॉडी है 70 to 80% ऑफ वाटर तो जो भी आप सोचते हैं वो खींच लेगा वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ इफ यू थिंक कि हम नाक से ज्यादा ब्रीथ करते नहीं द स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी स्किन जो है ना इज अ बिगेस्ट साउंड वो सबसे ज्यादा ब्रीथ करता है ठीक है ना सो ऑलवेज वेयर लूज कॉटन क्लोथ सो दैट इट कैन ब्रीथ इन एंड आउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओके always wear loose cotton clothes okay always wear loose cotton clothes very important again I'm repeating always wear loose cotton clothes okay very important so again I repeat karta hu first they'll get up in the morning they will do snanam okay फिर वही जगह पे बैठेंगे they'll light a दिया लगाने के बाद they'll put a cloth beneath them and they'll sit now how they start the process okay how they start the process वो process कैसे start करता है first the posture which they sit मैंने last time भी बताया था right leg जो होता है ना right leg का ये part मूलाधार पे या नीचे टच होगा and left leg इसके ऊपर ऐसे and बैठेंगे मुद्रा बाद में बताऊंगा पहले ये this is the most important thing first is the right leg and उसके ऊपर left leg या इससे क्या होता है okay अगर आप ऐसे बैठते हैं तो एनर्जी डजंट
falls down from the Muladhara and goes to the Mother Earth. नहीं, वो यहाँ पे preserve होता है. So this is the asana which they mostly use. Okay. Now, they are very strong in sensing the breath. Okay, they work a lot on ईडा पिंगला नाड़ी. मतलब ईडा पिंगला, ईडा मतलब लेफ्ट, पिंगला मतलब राइट. कभी मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा. Many people know ईडा means left moon sign and pingla means right sun sign, and sushmana means both the sides. Okay. Now, different rishis does different sadhana. Okay, अलग अलग ऋषि अलग अलग साधना करते हैं. Okay, now you need to decide what kind of sadhana do you want. Okay, for mental clarity, for clarity of thoughts. Okay, there's a different sadhana. Okay, now I'm talking about the basic sadhana which they do. Very important. After snanam vanam kar liya, bet liya, they always first drink 400 to 500 ml of water. Okay, normal water, tap water, they'll drink it. Okay, and then they'll fill another water, 200 300 ml of water, and they'll put it aside. साथ में साइड में रख देंगे. समझ में आया क्या करेंगे? ओके, पहले क्या करेंगे? वो पानी मटके का हो या किसी का भी हो, 1 या 2 ग्लास, ज्यादा नहीं, 250 to 400 ml या फिर 500 मैक्सिमम. ओके, they'll drink it आराम से. Again they'll fill it. Okay, and they will place it down. What kind of they use steel, they use silver, they may use gold, they may use copper, and they may also use wood, earth. Okay, मटके का पानी जो होता है ना, okay, मिट्टी का. Okay, so always they place down. Very important. Huh? Now, before doing any sankalp, okay, see, understand one thing. Each and every rishi muni, no, has given a role. हैज गिवन अ रोल. जैसे आपने देखा ना, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर रोल दिया जाता है. जैसे अगर इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, देयर इज अ सीईओ, देन जनरल मैनेजर, नो, वाइस प्रेसिडेंट, then president, then vice president, then general manager, senior, junior, and everybody has given role, huh? So they also have given the role. Okay, and their role is to take care of the earth, mother earth. Okay, उनका क्या रोल है? To take care of the mother earth. Sorry, not mother earth, the entire galaxy, entire Brahman. Please understand, there are lakhs and lakhs of galaxies, and there are lakhs of Brahman. Okay, so they have nothing to do with human being. Please understand, उनको मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है. पहले दिमाग में डाल दीजिए. This Rishi Munis doesn't. मैं और 10 minutes समझाऊंगा, and then we'll do certain practical sessions. So if you understand, if you think that if you will meet them and they will give certain blessings and your life will change, sorry, उनको मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है. They don't have any emotions, they don't expect anything. Okay, if they have the power, okay, to change the globe. Okay, they have a power to manifest something based on the direction given by their higher self. Okay, and who is the higher self? Maybe I'll tell you someday. And for them, human being is the smallest thing, very smallest thing. Okay, for them, ऐसा आप समझो कि ठीक है, छोटी सी चीज है. Okay, understand one thing, there are lakhs and lakhs of galaxies. कितनी लाखों galaxies है, करोड़ों galaxies है. In that there is one galaxy, in fact there are many planets, many earth, moon. In that there is one earth, उसमें एक earth है, उसमें there are many countries, उसमें एक country है India, उसमें you are staying in one of the place. It don't matter. They don't even matter what do you do, they don't even know what karma are you doing it. Okay, they don't even need to know what are you facing it and what all you are doing it. No, they are completely focused on what they want in life. Very. Okay, now the real Siddha Purush try to activate
the third eye. I'm not talking about Agnya Chakra, okay? There is a lot of difference between Agnya Chakra and third eye, okay? आजकल लोग Agnya Chakra को third eye बोलते हैं. Intuition is Agnya Chakra, but third eye is much beyond the intuition, okay? Third eye को intuition से कोई लेना देना नहीं है, okay? I know it's a bitter truth, but you need to understand that, okay? Maybe some teachings for the people who don't understand, you can say it is a third eye, but reality means spirituality. This is Agnya Chakra, intuition. If you are seeing some intuition of the past, present, future, this is the activation of your Agnya Chakra. Okay, but this is not the third eye. Okay, so if you think if certain person third eye is open, he can't stay in the society. वो society में नहीं रह सकता because he could see everything up, down, everything. So please understand that. So they have been given a certain role. For that they do sadhana, and their sadhana is depend upon various things. First is their breath, second is the sound, third is yoga, and once the combination of all three things, they automatically go into meditation. जब ये तीन चीज करते, जैसे वो सांसों पे ध्यान देते हैं, सांसों की प्रतिक्रिया करते, सांसों की एक्सरसाइज करते, they do exercise of the breath, they do certain exercise by chanting certain cosmic sounds, उसके बाद they do certain yogic kriya, maybe certain mudras, and after that, during this process, they automatically go into meditation. They automatically go into meditation, and after maybe 15-20 minutes, after 15 minutes, they directly connected to the cosmos. Okay, they directly connected to the cosmos, and they get the knowledge. Okay, they get the knowledge. Now, if you think, I'll tell you the bitter truth, huh? Very important, you need to understand. आपको लगता है कि नॉलेज मिलना बहुत सिंपल चीज है, नहीं, बहुत डिफिकल्ट है और बहुत पेनफुल होता है. I'm telling you, it's painful thing. For example, if you met a certain guru, if you met a certain guru like this, like Siddhas, and you ask certain question, okay, एक question पूछा, okay, so XYZ, for example, Pankil ji, okay, Pankil ji has met a certain Siddha, Rishi Muni, okay, and he asked the question, okay, so any question, okay, sir, is this my last birth or I will take another birth? ओके ऐसा अगर एक क्वेश्चन है, अगर पंकज जी एक क्वेश्चन पूछते हैं सिद्ध पुरुष को कि रियल सिद्धार्थ को और या ऋषिस को कि ये मेरा लास्ट जन्म है कि और एक जन्म लेने वाला हूँ. सो वेन एवर अ ह्यूमन बींग आस्क अ क्वेश्चन टू अ ऋषि मुनि और अ सिद्धा, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल ऋषि मुनि, they just close their eyes, okay, and they get the knowledge that, see, not necessarily they will get the answer. They'll wait for maybe 10 seconds, 12 seconds, and some energy will go inside with the answers, okay? ऐसा नहीं कि उनके सब knowledge है, they get connect to the cosmos. Not necessary they will have the answer of what Pankaj is asking, okay? Because उसके लिए भी the cosmos should allow, they should allow him, okay, allow that this is the right time, this is the not right time. So many rishis will say no, this is not the right time. That means they have not got the answer from the cosmos. That means this is the not right time to tell the answer. Understood what I'm trying to say? So they always take time to answer any question, to get the real answer, okay? And if they answer, okay, they will answer the question with the question. Understood? समझ में आया? वो आंसर भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे. मतलब इफ अगर पंखिल जी ने एक कोई गुरु को क्वेश्चन पूछा, ओके, तो वो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, वो आपके मुंह से ही निकालेंगे, वो पंखिल जी के मुंह से ही निकालेंगे, ओके, क्योंकि इफ यू सिद्धा और ऋषि मुनि गिव अ करेक्ट आंसर, वो उनको सच मान लेगा और वो भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन बन जाएगा. अंडरस्टूड? I know it's थोड़ा सा difficult, but you need to understand that. Again, I'll explain in English. For example, if I am asking a question to a Rishi Muni, he will answer the question with the question. मतलब वो क्वेश्चन में आंसर देंगे, खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके, वो खुद ही पूछेंगे, ओके. सो क्योंकि अगर if he gives the direct answer, you will stamp it and it can become an illusion.
and that illusion is not correct. Why? Because if any Rishi Muni gives the direct answer and वो आंसर का कुछ रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया, that ऋषि मुनि becomes a great karma का पात्र, it fall into a great karma. So please, the biggest rishis or the siddhas, they never answer the question. Secondly, they think 100 times before they answer to any sadhak or any student, because they may take in a different way. एग्जाम्पल देता हूं, पहले मैं हिंदी में दूंगा एंड देन आई टेक इट एन एग्जाम्पल इन इंग्लिश. वेरी गुड एग्जाम्पल, यू विल कम टू नो. वन लेडी, ओके, अ मैरिड लेडी, एक विवाहित लेडी, एक गुरु को मानती है, वेरी पावरफुल गुरु, ओके, सिंस 13 ईयर्स, 13 साल से वो गुरु को मानती है, ओके. गुरु के अंदर बहुत पावर है, दैट गुरु हैज अमेजिंग पावर, ओके. Now that lady's husband has gone to some work for 15 days. Okay, उनका husband 15 दिन के लिए काम के लिए गया. Okay, and 13 days हो गए. It has completed 13 days. Now, but she has that curiosity that when his husband will come, उनका पति कब आएगा. So she asked the guru, Guru, please आप बता सकते हैं कि मेरा पति कब आएगा. When will my husband will come? Can you please tell me? So Guru told me, Guru just आग बंद किया. And after 2 minutes, he said, no, I'm not supposed to tell. Okay. So then that lady became very emotional. And she told, मैंने आपकी इतने सालों तक सेवा की, मैंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, फर्स्ट टाइम आपसे कुछ पूछ रही हूँ. 13 years I'm doing seva, I followed whatever you have told, and I have not asked any question. This is the first time I'm asking. Please, you should give me the answer. So, okay. तो वो भी इमोशनल थोड़े हो गए, नहीं होना चाहिए था बट हो गए. एंड ही सेड ऑन द 15th डे, मतलब एग्जाम्पल है, ऑन मे बी दिस डेट, मे बी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, दिस टाइमिंग, ही विल कम टू योर हाउस. ये टाइम पे, ये वक्त पे आपके घर पे आएंगे. तो उन्होंने क्या किया, हस्बैंड के लिए वो ही दिन जब वो आने वाले थे, द टाइम ही वाज डन, he used to come, he was supposed to come. 2-3 hours before, he made the favorite food and wore a sari to make him happy. So he was, Guruji told him that he will come at 11 o'clock. उनको बताया कि वो 11 बजे तक आएंगे. तो exactly 10:55 को उन्होंने साड़ी वाड़ी सब पहन के खाना रेडी हो गया, और जैसे नॉक किया हस्बैंड ने बाहर से, exactly at 11 o'clock she opened and she hugged him. Okay. For 10 seconds husband was very happy. 10 सेकंड के लिए वो बहुत हैप्पी हुआ. बाद में उनको गुस्सा आया. ओके, he told, that husband told to the wife, वो आदमी ने उनकी पत्नी को बोला, पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूं, लगता है आप किसी दूसरे इंसान के लिए वेट कर रही होगी. ओके, सी, सो मिसअंडरस्टैंडिंग. So that lady said, no, please don't misunderstand me. Guru ने मुझे बताया. The Guru told me that at this date, you are supposed to come. See, so powerful my Guru is. So then वो जो इंसान, उनका हस्बैंड है, वो क्या बोलता है, नहीं, मुझे तो लगता है आपका गुरु के साथ ही कुछ चक्कर है, चलो गुरु के साथ, चलो गुरु के पास. ओके, सो आई थिंक सो देयर इज सम फिशी विथ योर गुरु. लेट अस मीट योर गुरु. ओके, तो वो गुरु को मिले. गुरु के साथ, गुरु को पूछा उन्होंने कि आपने बोला है कि ये टाइम पे आने वाला हूं मैं, आपने बोला था मेरी वाइफ को, हैव यू सेड टू माय वाइफ दैट एट दिस डेट दिस टाइम आई एम सपोज्ड टू कम. सो ही टोल्ड यस. एंड वो इंसान बोले, उनका हस्बैंड बोला, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, यू प्रूव मी दैट यू आर राइट. ओके, देयर इज अ काउ, एक गाय है, वो प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है. ओके, आप बता सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है. Okay, if you say right, I believe you. If you say wrong, I don't believe you. If a cow is pregnant, can you tell it's a baby born boy or a girl? If you tell correctly, I believe you. Otherwise, I won't believe you. Okay, उन्होंने ऐसा शर्त रखी. तो वो बोला मैं नहीं बता सकता. Okay, ये कर्मों के खिलाफ है. मतलब अच्छा, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, इसका मतलब आपका चक्कर है मेरी बीवी के साथ. तो उनको बहुत पेन हो रहा था.
तो उन्होंने आंख बंद के साधना की और बोला ये तो बेबी बॉय है, ये तो लड़का है। तो उस आदमी ने क्या किया पता है? व्हाट ही डज, ही टुक द नाइफ और गाय का पेट काट दिया, कट द स्टमक ऑफ द गाय। बच्चा निकला, ओके, लड़का निकला लेकिन मरा हुआ, डेड। सो पेन, होल कर्मा किसको लगा पता है? दैट ऋषि मुनि गॉट ऑल द कर्मा। व्हाई? अगर ये नहीं बोलते तो ऐसा नहीं होता। जस्ट वन वर्ड कि कभी आने वाले हस्बैंड, एंड सी द स्टोरी हैज बीन क्रिएटेड, अंडरस्टूड? सो they think 100 times before telling anything, because उसका क्या रिजल्ट आएगा you don't know the result, you can't imagine. So please understand, the master, the real master or the siddha or guru knows आप which standard you are in. ओके, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? थर्ड स्टैंडर्ड, ओके, सो ही विल टीच यू ओनली द IQ बेस्ड ऑन द थर्ड स्टैंडर्ड, उतना सिखा सकते हैं। अगर आपको 10 स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट सिखाएंगे थर्ड स्टैंडर्ड वाले को तो बाउंसर जाएगा ना, इट विल बी बाउंसर। इफ योर कैपेसिटी इज टू ईट ओनली 2 चपातीज, ओके, दो दो सब्जी या एक सब्जी या 2 वेजिटेबल, ओके, यार 2 चपाती 1 वेजिटेबल, आपको मैं 5 रोटी खिला दूं, 5 चपाती खिला दी तो आप वॉमिट करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी इतनी है। तो उनको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितना है। Okay, you don't have to judge. Sometimes we judge, oh, this one student, एक को तो वो ज्यादा सिखा रहे, he's teaching too much to one of the student, एक जन को वो बहुत कम सिखा रहे, other student को कितना कम सिखा रहे, so partiality. No, he knows what is right and how much you can sustain it. Okay, understood? Okay, so never ever judge. Okay, your master knows. And what to do. Of course, finding a guru is not easy. Finding a teacher is easy. Finding a master is easy, but finding a guru is not easy. Okay, मतलब टीचर इजीली मिल जाएंगे, मास्टर इजीली मिल जाएंगे, गुरु इजीली नहीं मिलते हैं। यू नो व्हाई? टीचर एंड मास्टर विल टीच यू, वो आपको सिखाएंगे। ओके, ही विल टीच यू, ही विल सिखाएंगे, एंड देन ही विल टेल यू कि आप कर लो। ओके, यू डू इट and your life will change. That is the role of the teacher and the master. You know what is the role of a guru? The other student, shishya ka pain is their pain. Happiness is only their happiness, but the pain is their pain. So it is the responsibility of a real guru till the end. Even if you like or not like, okay, he will always protect you. Always protect you. Of course, he will not interfere in your karma, but he will always protect you. Okay. So this is the role of a guru. That's why guru never make a shishya so easily. Nahi. Master teacher can make many students, but real guru take lot of give lot of challenges to the shishya before making a shishya. Okay. तो बहुत challenges देते because क्योंकि the guru even has a power to transform the knowledge to another person. Matlab, there is something called as Vasi Yogam. Okay, Vasi Yogam. I don't know if you find it in a Google. Okay, Vasi Yogam. Vasi Yogam is a science. Okay, in which, understand, Vasi Yogam naam hoga, but I'll tell you the real meaning. Before death or before taking another birth, I'm talking about ऋषिज, रियल ऋषि और गुरुज। ओके, दूसरा बर्थ लेने से पहले दे हैव अ चॉइस, उनके पास एक चॉइस होता है टू ट्रांसफर द नॉलेज टू द शिष्य, टू द अनदर स्टूडेंट। चॉइस है उनके पास। ओके, एंड थ्रू वासी योगम दे कैन डू दैट। इट्स अ साधना। थ्रू वासी योगम यू कैन transfer your complete knowledge of the Brahman to the other person directly, and he can get it like that. Understood? समझ में आया? Okay, how they do it? How they do it? See, I tell you one thing, there are different yogic exercises which you need to do. Okay, now any question as of now you need to ask before we start with the practical thing? इतना समझ में आया as of now? Have you understood? Say yes or no or little bit or everything. Just write something on the chat box because I'm just speaking आप सुन रहे हो, so I don't know, मुझे पता नहीं चल रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. Please.
Yes, everything, sir. Super, super. Very good. Everything, sir. Good, good, good. Okay. All wow. Now, what exactly Vasi Yoga means? You know what Vasi Yoga means? They hold the breath for certain time, and they activated the pineal gland, and they use certain mudras, and they use certain postures, okay, and certain sounds. उससे वो अपनी एनर्जी को एक इतनी हाई लेवल पे लेके जाते हैं कि दे इवन हैव अ पावर to take somebody karmas and put it to prabhamjan. There is one place which is called prabhamjan. Okay, that is also this is also the subject of Rishi Munis. Okay, prabhamjan, prabhamjan. Okay, टाइप करना गूगल में मिलेगा तो शायद नहीं मिलेगा, हाँ अगर मिला तो गुड है. So there is one. So what I'm trying to say is we also have so much of power. We also have so much of power. हमारे पास भी इतना पावर है. But that is their role. That is their role which they have chosen it. उन्होंने वो रोल चूज किया है. जरूरी नहीं कि आपको भी वही रोल चूज करना. It is your choice what you want to do it. Of course, they use one more thing. They also use Siddha Herbals. Okay, by because whenever you do meditation, सबसे important चीज, whenever you do meditation, okay, or sit in a meditation, you should not move your body like this, like this. No, there should be a circuit which should be completed. Okay, even if you do it for 15 minutes, ideally 20 minutes is amazing meditation. 20 minutes, okay. बट वो जो 20 मिनट है, यू शुड स्टैंड स्टिल लाइक अ स्टैचू or sit like a statue, not even doing like this, like this, like this. लेकिन मैंने देखा है, I have seen people meditate even in 10 minutes. They move body, ऐसे body move करेंगे, ऐसे body ऐसे 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 पैर फैला देंगे. बिकॉज नो एनर्जी. पेन हो रहा है, बैक पेन, गर्दन पेन, ये पेन. देयर इज नो कंप्लीट सर्किट. जीरो यूज. इवन इफ यू डू 1 hour ऑफ मेडिटेशन, लेकिन बॉडी हिला दिया ना, यू विल फील ओ आई एम गेटिंग एनर्जी. आई कैन सी शिवा, मुझे शिवा दिख रहा है, विष्णु दिख रहा है, कलर दिख रहा है. जीरो यूज, जीरो रिजल्ट, zero. You will go into complete illusion, imaginary world. I'm telling you, zero. Okay, but even if you do 15 minutes of meditation without moving your body को हिलाते नहीं, आंख बंद करके perfectly बैठ गए, that 15 minutes is equal to how much? 6 hours, 10 hours, 15 hours of meditation without moving the body. The result, if you get it, super, huh? So it is not about quantity, it is about quality. कितना टाइम तक मेडिटेशन करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करना है मेडिटेशन, ओके, वो इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, अंडरस्टूड. ओके, for that they take jadi booties. Okay, they take jadi booties, they take siddha herbals. Okay, now I met one of a person, okay, in the forest. I went to the forest accidentally. I went to the forest, okay, and I'll not tell the whole story. Okay, एक हर्बल मुझे दिया, पेड़ में से एक पत्ता निकाला, एक पत्ता निकाला, एंड मुझे ऐसे करके खिलाया. यू विल नॉट इमेजिन, फॉर 3 days I didn't ask for water, I didn't ask for food, and I was so energetic, so much power. But we don't know that herbals, no, it comes from the forest. Okay, so I asked him, मैंने पूछा, गुरु जी क्या रेसिपी है, मुझे भी तो बताओ, ये कहाँ का पत्ता है. ओके, तो उन्होंने क्या आंसर दिया पता? व्हाट आंसर? ये भगवान का आशीर्वाद है, ये कमर्शियल लोगों के लिए नहीं है, जिसके कर्म में लिखा है उसको ही मिलेगा. सी, अंडरस्टूड? So much of powers we have. I'm not talking about just Ayurveda. They are called Siddha Herbals. If you say Siddha Herbals, no, it is more than 3,500, 5,000 years before. So they take certain herbals to make their body very strong at any age. Maybe आपका एज 2 साल हो या 70 साल को फर्क नहीं पड़ता, because
they have a power to increase their age. Okay, so normal age for a certain human being is 120 years. Okay, once you are reached zero karmas, do you want to बात सुननी है, ये थोड़ा सा समझना है ये क्या है कॉन्सेप्ट। ओके, जब आप 120 साल के हो जाते हैं, ओके 120 साल के, और आपका कर्मा कर्मा नील हो जाता है ना, तो कर्मा नील हो गया, एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग if they are staying in the society and everything, if it is full healthy perfectly, 120 years normal age, 120 years. But if you want to go beyond the karma, okay, so you can increase your age from 120 to 250, 350, 500, 750, 1000, 1500, 1800, 2000. Okay, I'll tell you, imagine आप एक बार वो कर्मा के ऊपर गए ना, you will think that I'm meditating for 15 minutes. Yeah, 1 minute is maybe 1 year or 2 years. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो इफ आपको लगता है कि वो कितने टाइम तक बैठे हैं, कितने सालों तक ऐसे आंख बंद कर रहे हैं, बट they have complete control on your mind, body and soul, so they don't take breath. Okay, they are into zero breath. Okay, once you reach the zero breath, okay, and it is possible, you are taking breath from inside, not from outside. So once you reach the zero breath na, they are taking breath from inside, not outside. Ye bhi many people doesn't know. Okay, one is, now what we are taking is we are breathing and breathe out from the outside air na, बाहर से हवा ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ना। ओके, at certain stage you will reach where आउटसाइड का हवा बंद, अंदर से ही हवा, अंदर से ही हवा, सो आउटसाइड का हवा जीरो। ओके, सो आउटसाइड inhale exhale is zero, and inside only breathing happens, so their age automatically increases. Okay, so they don't eat food, they don't eat water. Okay, everything they get it automatically. Okay, there are 1 lakh crore cells on the left side, 1 lakh crores on the right side. They are so much activated, they can generate electricity. A single person can generate electricity to a whole city. Okay, so much of power. Okay, but they'll not show the powers, that's a different thing. Okay, मतलब कितना पावर है हमारे अंदर, so much of power we have. Okay, and we are not even using it, 2% of it. Okay, so this is the way they do it. Now how to start it? So once you get up early in the morning, take a bath, दिया लगा दीजिए, glass पानी पी लीजिए. Okay, put the glass aside, take an आसन, नीचे रख दीजिए, आराम से बैठिए, loose cotton clothes, you can wear boxers, guys don't wear anything above. A woman can wear dress, cotton dress, white dress, or very dress which is little bit loose, so that the skin का air अंदर बाहर जा सकता है. Okay, then sit in this asana, right leg touch in, left leg touch out. Okay, so ये आसना में बैठ सकते हैं, right leg touch it, left leg like this. Okay, straight. Okay, now you can take any mudra, you can take this chin mudra or any mudra. Okay, whatever is to start with. Okay, I will say whatever mudra you take, all the fingers should go down. बताता हूं मैं, ठीक है। ये जो मुद्रा है ना, आप कोई भी मुद्रा लेते हैं, अब बैठते हो ऐसे ने, तो आपकी हाथे सब ऐसे होनी चाहिए, सब नीचे, ये सब उंगली फेसिंग द डाउन, ऐसे मुद्रा लेना। अब मुद्रा लोगे ना तो ऐसे लेना। 1 सेकेंड, जस्ट शो इट टू यू। अब ये मुद्रा ले रहे हो ना, अब बैठते हो ऐसे तो लेना है। अंडरस्टूड? तो स्ट्रेट नीचे बैठ जाना है। ओके, वेट 1 सेकेंड, आई जस्ट शो इफ इट्स पॉसिबल। 1 सेकेंड। अब जब बैठते हो, आपका हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, आराम से, पांचों उंगली नीचे बैठनी चाहिए। नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू टेक दिस मुद्रा। ओके, आप हाथ को नीचे रख सकते हैं। ओके, आराम से नीचे रखते हैं, पांचों उंगलियां नीचे, फेसिंग टू द मदर अर्थ, फेसिंग टू द मदर अर्थ। ओके, स्टार्ट विद दिस मुद्रा, बहुत पावरफुल मुद्रा है। नेवर एवर यूज दिस मुद्रा
This you have seen that Buddha, Mahavira. This will take you to the vairagya. वो वैराग्य में पहुंचा देता है. You don't want vairagya because you are staying in the society. Okay, so please don't use this mudra. ऐसा बैठ के लोग मुद्रा करते हैं ना, like this. Don't use this mudra. No, no. You can use this mudra like this. Okay, पैर पे रख के like this mudra. All the fingers facing down. Okay, very powerful. There are other mudras also, but to start with, you can use this mudra. This is also very powerful. Okay, that means you are ready to receive. आप रिसीव करने के लिए रेडी है. Always keep your head straight. Okay, okay. First and the most important thing, first you need to cleanse your Ida Pingala Nadi so that your Shushmana Nadi gets activated. Okay, now we have to make a Shushmana Nadi very active. Okay, because they don't have any desires. Once you don't have any desires at that moment, वो moment में आपको desires नहीं होनी चाहिए to connect to the cosmos. So you need to activate the Chandra Nadi, you need to activate the Surya Nadi. If both are running perfectly, and then your Sushmana Nadi perfectly activated, and that's the time you get connected. Okay, normally 5 to 10 minutes ही Sushmana Nadi चलती है, but they try to take it to a longer period of time, 30-40 minutes, so that they get maximum knowledge of the cosmos, of the Brahman, of the universe, okay, or the universal truth, okay, or the cosmic energies. Okay, so what they do is they do Nadi Shodhan. Okay, now how do they do Nadi Shodhan? They do different exercise. First is they cleanse their Ida Pingala Nadi. How? I've taught you many a times. Right nostril बंद करके लेफ्ट से ही ब्रीद इन करना है, slowly, and breathe out करना है. Please understand, it is not about the quantity, it is about the quality. Okay, can you see me? अब दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं perfectly. राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है, स्लोली, आवाज नहीं आनी चाहिए. देयर शुड बी नो नॉइज व्हेन यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. मैक्सिमम जितना ले सकते हैं, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds. Real activation starts once you take 30 seconds only to breathe in. 30 सेकेंड, 30 सेकेंड लगने चाहिए सांस अंदर लेने के लिए, 30 सेकेंड लगने चाहिए सांस छोड़ने के लिए, टू ब्रीथ आउट. 30 seconds. To start it, you can start with 5 seconds, then 7, then 8, then 10, then 12, 13, 14. I'm telling you, अरे 15 तक भी पहुंच गया ना, बॉडी पूरी हल्की हो जाएगी, वेट लॉस वैसे ही हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नासिका से ब्रीद इन 15 seconds, ब्रीद इन, एंड वही नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट. जस्ट डू इट फॉर 5 minutes. 5 minutes. अलार्म रखिए, नो प्रॉब्लम. लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट. 5 minutes. ओके, वो 5 minutes में आप 10 बार करते हैं, 20 बार करते हैं, या 3 बार करते हैं, नो प्रॉब्लम. क्वांटिटी डजंट मैटर. 5 minutes लेफ्ट, 5 minutes राइट. ओके, अंडरस्टूड. हाँ, ये पहले ये नाड़ी शोधन करते हैं. ओके, देन फिर क्या करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक थिंग्स. हाँ, देन व्हाट दे डू इज, पहले नाड़ी शोधन कर लिया आराम से. ओके, देन दे विल डू अनदर नाड़ी शोधन. पहले ईड़ा नाड़ी शोधन, ईड़ा को कर लिया, फिर पिंगला को कर दिया, फिर दोनों को भी ऐसे ही करना है. मैक्सिमम दोनों नॉस्ट्रिल से साथ में ब्रीद इन करना है, होल्ड नहीं करना है, एंड ब्रीद आउट करना है. मैक्सिमम 30 seconds to breathe in. To start with 5 seconds, 5 seconds सांस अंदर ट्राई करो, सांस छोड़ो. इजीली हो रहा है तो 7 seconds, 10 seconds. You need at least take 30 seconds to breathe in and 30 seconds to breathe out. हो गया, ये सेकेंड एक्सरसाइज वो करते हैं. ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ बेसिक एक्सरसाइज. ये समझ में आया है? आर यू विथ मी? से यस और नो. मैंने क्वेश्चन पूछा यार. ओके, वेरी गुड. यस यस यस, सुपर. कितना सिंपल है. मेनी पीपल आर सेइंग नो हेल्थ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ऐसे ही चला जाएगा. हेल्थ प्रॉब्लम 30% इज ओनली योर फूड. 30% ओनली फूड है. 70% इज योर थॉट प्रोसेस, योर इमोशंस, वेयर द कर्मा कम्स. ओके, तो 70% आपकी कर्मास है. तो कर्मा जो है ना, जो बीमारियां, ओके, वो हमारे पास पावर है. ओके, जस्ट बाय यूजिंग सर्टन हर्बल्स, yogic kriya sadhana, and then see life purpose, soul purpose, body health. Okay, your aura will become so strong. Okay, whatever is good for you will attract.
बट वॉट एवर इज बैड फॉर यू विल गो अवे। बट एक चीज होगा, ये सब साधना करोगे तो क्या होगा, उनमें इंसान का रियल ट्रूथ आपके सामने आ जाएगा, इंसान की छवि आ जाएगी। आपके नियर एंड डियर वन भी हो सकते हैं, यू गेट शॉक, सो प्रिपेयर फॉर द शॉक। ओके। हाँ, तो आप जिसको समझते रहे कितना अच्छा था, वह उल्टा समझेंगे, और जिसको आप सोचेंगे ये तो मेरा दुश्मन था, वो रियल में अच्छा निकलेगा। सो और जिसको जानते भी नहीं है वो आ जाएगा, और जिनको जानते हो वो चला जाएगा। सो एनीथिंग कैन हैपन। सो इट्स इट, वॉट एवर इज गुड फॉर यू, फॉर योर हायर सेल्फ, you will get it. Understood? And whatever is not good for you, that will go away. Okay. Understood? Why it has effect on your body? Because weight, overweight, everything, okay, stomach or thighs जो बढ़ते हैं ना, this is all the emotions. And emotions are connected to karmas. So once you're doing this sadhana ना, your thought process changes. So thought process changes ना, तो आपकी बॉडी में भी बहुत परिवर्तन आता है। ओके, तो दो एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, दो एक्सरसाइज की, बिकॉज टाइम कम है ना, तो इसके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले 5 मिनट्स ये, 5 मिनट्स ये, और 5 मिनट्स ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो 5 मिनट्स करो। ठीक है, तीन एक्सरसाइज हो गई। ओके, ना फोर्थ एक्सरसाइज देयर आर डिफरेंट ओम चैंटिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, अमेजिंग साउंड। नॉट, अभी तक मैंने लोगों को रिट्रीट में भी 3 या 4 साउंड्स है, we शायद ये रिट्रीट में विच आई बी टेकिंग, आई बी एडिंग मेनी साउंड्स। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे भी सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लोली स्लोली, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो हाँ, so always start with Om sounds in the morning. Okay, morning. See, before sunrise, if Om sounding is real 100% for the spiritual point of view, after sunrise, if you chant Om, it is from health point of view. समझ में आया? See, yes or no? Om chanting before sunrise is from a spiritual point of view. Om chanting after sunrise is from a health point of view. Okay. तो आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके पहले आपने ब्रीथिंग कर ली, एक एक नाड़ी का शुद्धिकरण किया, ईड़ा मून साइन लेफ्ट, देन राइट, देन ब्रीदिंग ब्रीद आउट। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज पोस्चर लेके आराम से बैठ जाना है, आराम से बैठ के आंख बंद करके, ओके, क्या करना है, ब्रीद इन फ्रॉम द नोज, breathe out from the mouth. Okay, that you have to do only 7 to 15 times. Breathe in, breathe out, breathe in slowly, 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 breathe out. Okay, 7 to 15 times. So 5 minutes ये, 5 minutes ये, 5 minutes breathe in breathe out कर लिया, फिर आपने ये नाड़ी शोधन कर लिया। Okay, now there are 3 or 4 yogic kriyas which they do. Maybe next time I'll teach you. Okay, because मैं आपको पहले से prepare करना रहेगा, because many people have had their dinner now and it should not be done after the dinner. So there are certain 3 4 yogic kriyas which you need to do it. Okay, which you need to sit and meditate. उसके बाद you need to use 4 sounds. Okay, आज हम एक साउंड करते हैं ओम. सो यू नीड टू ब्रीथ इन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं, व्हेन यू ब्रीथ इन यू नीड टू चैंट ओम फ्रॉम इनसाइड, व्हिच पीपल फॉरगेट. एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट, आपको मुंह से ओम चैंट करना है. लाइक ब्रीथ इन, मैं सांस अंदर ले रहा हूं, मन में ओम चैंट किया, एंड सांस छोड़ रहा हूं तो ओ. अगेन ब्रीथ इन, मन में ओम बोलना है. अगेन ब्रीथ आउट, ओ. अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सी, अंडरस्टैंड वन थिंग. आपको पता है ये देयर आर 72,000 साउंड इन विच देयर आर सर्टेन साउंड विच आई विल बी टीचिंग यू. ओके, आपको पता है उससे क्या होता है, व्हाट विल हैपन.
आपको क्या लगता है क्या होगा? जस्ट टेल मी व्हाट विल हैपन व्हाइल चैंटिंग द साउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं वट एवर आई एम टेलिंग नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है क्या होता है? साउंड से इफेक्ट ज्यादा नहीं आता। आप जब साउंड बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया, पता है साउंड से पूरा सृष्टि का क्रिएशन हुआ। द होल creation of the cosmos is through sound. Okay, but the most important thing is that sound is not important. ये जो मैं साउंड सिखा रहा हूं या सिखाऊंगा आगे, वो साउंड के बाद आपका अंदर में एक साउंड आएगा, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ टू अ बेटर लेवल। आप समझ में आए, एक अलग ही लेवल में। सो द एक्सटर्नल साउंड जो आप चैंट कर रहे हैं, ओम एंड देन ही, क्लीम, या जो भी हम, ओके, देन मम, ओके, आइम, ईम, जो भी है, ओके। सो इससे क्या होगा? ये एक्सटर्नल साउंड से अंदर से अदर साउंड विल स्टार्ट रनिंग। एक होता है एक्सटर्नल साउंड, एक होता है इंटरनल साउंड, एंड दैट इंटरनल साउंड विल connect you to the cosmos. And वो internal sound, when it connect to the cosmos, you'll get knowledge from the cosmos, you get energy from the cosmos, and your life will change to a different level. समझ में आया? Okay. So I've told people, no, you do it Om chanting for one mandala, two mandala, three mandala, four mandala. उससे क्या होगा? After certain seven mandala, okay, I'll teach you. मतलब many people have completed. There is one sadhana. If you do it, अंदर से साउंड आना स्टार्ट होगा, एंड यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट साउंड, एंड दैट will take you to the highest level. Automatically you will go into meditation. You don't have to do meditation. समझ में आ रहा है अभी? Okay, yes or no? Many people who are old who are new, अभी समझ में आया? The reason I'm telling you, I've given you the homework of doing sound. Okay, so जब ओम chanting or any other sound, okay, जब आप chant करोगे continuously, minimum you have to do it for 48 days, which is called one mandala. Okay, I tell people to do it for 24 minutes, but first you need to start with 6 minutes and 12 minutes. तो 5 minutes ये किया, 5 minutes ये किया, 5 minutes अंदर बाहर किया, and at least 6 minutes minimum, 12 minutes किया तो best to start with. Start with. I've seen I've seen people who are doing it 24, 48, 72. I'm just saying 12 minutes. 6 to 12 minutes just do Om chanting. Okay. And after doing Om chanting, just focus on your breath by feeling the temperature of the breath. That's all. Try करो कल से. Just try it tomorrow. Four things. Four things. कैसे? स्नान मान सब कर दिया, पानी पी लिया, एक क्लॉथ नीचे रख लिया, आराम से बैठे हैं, दिया लगा दिया, ओके, आंख बंद किया, 5 minutes ये, 5 minutes ये, 5 minutes ये, then Om chanting, Om chanting, then take any mudra, sit down, straight, okay, straight, eyes closed, and try to hear the sound from within. In 48 days, you will find amazing sound which is good for your soul and which will help you to connect to the soul, and it will change your life altogether. I'm telling you, कितना सिंपल है. ओके, सिंपल है बट डिसिप्लिन चाहिए. ओके, सिंपल है प्लस डिसिप्लिन चाहिए. इतना कर सकते हैं, 5 minutes, 5 minutes. ओके, those who are old, those who have already finished, उनके लिए ठीक है. द पीपल जो नए हैं उनके लिए 5 minutes, 5 minutes अंदर बाहर, 5 minutes, फिर मुंह से सांस, नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना, 12 minutes ओम, आराम से बैठ जाइए. सुपर. 20 minutes, 20 minutes बैठने का. कितना? 20 minutes to 40 minutes मैक्सिमम मेडिटेशन. 20 to 40 के बीच में, ज्यादा नहीं करना है. 48 days के अंदर you will feel all the sound from within, all the sound from within, and then see your life will change 360 degrees. Seriously. So will promise me that next week if I take a lecture, okay, you will share me the experiences कि जो 4 step करे उसके बाद क्या हो रहा है.
And then I'll show you the fifth, sixth, and seventh. Fifth will be a yogic kriya. Okay. Sixth will be the posture, and then amazing result आता है. Okay. कितना सिंपल है, कितना सिंपल है. ठीक है. Okay. Any question you need to ask? Which direction? You can sit in any direction. Okay. Before asking question, I just want to tell you that I have a retreat in Mumbai. Normally, I don't take retreat so easily, but some people wanted to come close by. They can't travel, तो इसके लिए मैं मुंबई में retreat ले रहा हूँ. Please, after that, I will not take retreat. People know that normally I take retreat after 1.5 years, but of course I'll take retreat, but maybe in December or maybe next year, November, December or next year. Okay, so I normally don't take retreats. Okay, I just give this seminar जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे ही दे रहा हूँ, but of course यहाँ पे मैं 1-1.5 घंटे बता रहा हूँ. In retreat में I only teach for 15 to 18 hours alone. I teach me myself for 3 days, 4 days continuously. So 17 से 28 July retreat है. Okay, 19,900. It includes food, stay, all the workshops, everything. The power of your breath, the power of the sound, yogic kriya, yogic walk, and some cosmic knowledge. Okay, how to connect, how to touch the cosmic energy, and everything. We'll be learning that. Okay, 70. It's in Igatpuri, amazing resort. Okay, and food is amazing. Okay, 4 to 5 times of food you will get it. Not to worry. Okay, a sleeping time is 9 o'clock, but you'll not sleep at 9 o'clock because people sleep at 12 o'clock in the night, and you have to get up at 5 o'clock, but you will not sleep only because you want more and more and more. So if somebody wants to join, you can join. I take only less people. This is the last chance in Mumbai. Next time I'll be not taking in Mumbai. Okay, I rarely take it in Mumbai. मतलब इसके बाद मैंने मुंबई पहले लिया था 2022 में. Okay, उसके बाद में after 2 years I'm taking in Mumbai. Okay, so it's 17 to 20th July, very reasonable, okay, because it includes the stay, food, and everything, okay. Uh, it's a mind blowing, it's to discover your life and soul purpose, okay. I will teach you the integration and everything. Every time we learn many new things. If you are serious, if you want to attend it, please let me know. And the best time is it's a rainy season. So rainy season, Igatpuri is like heaven. Okay, so that's why I've chosen this place. Okay, if somebody wants to ask any question on that, they can contact me on this number. And Siddha Herbal का मैंने बात किया था. I'm already launched it. I've got the certification. I've taken the certification of SGS International Lab, which is applicable to 170 countries. And आप believe नहीं करोगे, जब मैंने इसका result निकाला, if you want, I'll share you the certificates of the lab too. This has called 18 plus amino acids. Nobody in the world can produce this 18 amino acids. 18 amino acids का मतलब body का मतलब पता है कि बॉडी के अंदर जो भी आपको प्रोटीन, विटामिन, बॉडी के अंदर जो भी आपके लर्न, लीवर्स, किडनीज, जो भी स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, सब कुछ इसके अंदर है. आयरन, कॉपर, पोटेशियम, एवरीथिंग. No milk, no egg, pure vegan, but it's a Siddha herbal. So please, its expiry is only 6 months, not 2 years, because we don't give any preservative. Amazing. If somebody sits for 10 minutes, spinal cord strong karna. So this, of course, I've taken many other jadi booties also, but this comprises of around 26 herbals, and which are natural, okay, which are natural. And if somebody wants to inquire about it, it's okay. And it has got a stamp of Europe country, developed in Finland and manufactured in India in the South Forest. Okay, so I'll be sharing all the details in the coming week, and it is freshly made. So once it is completed, you need to pre-order. Okay, you can take it as a aate mein dal ke in making chapati or a porridge or a shake or in dosas. And what's the difference in me? Previously I do exercise, I do yogic exercise. I do Surya Namaskar. First I used to do 3, 6. Now I can do 36 at a stretch. Okay, I can do sit-ups more than 100 at one time. Okay, I can do like jumping, okay, 400, 500 at a time. So your immunity becomes like
strong. Okay, so the reason people say, no sir, how can you talk for 18 hours? So it is not just meditation and healing, also I take Siddha Herbals, so it's a combination of all. Okay, it's very cheap. It is, of course, this is never available across the world. Maybe I'll patent it later. Okay, I'll patent it later. But I'm patenting it up. uh, One of my friend from Finland, she's registering as a patent the name and everything, so that nobody can misuse it. Okay, तो ये सब चीज चल रही है. Okay, it's 1/4 of all the other cost. Okay, इतना costly नहीं है. So if somebody wants to attend this, let me know. Only few days left. Don't, if you are from Mumbai and nearby, so don't waste this opportunity. Okay, because traveling में पैसा चला जाता है, and this is an amazing place, huh? I'm telling you. Okay, any other question or somebody wants to ask before we end the session? Do we light a diya before doing breathing exercise? Absolutely. Starting mein, you, from the start you need to light a diya, and then you have to do breathing exercise. Breathing exercise is the part of meditation. Sound is the part of meditation. सिटिंग क्वाइट इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन. वो मेडिटेशन ब्रीदिंग से ही स्टार्ट. आपने स्नान किया ना, स्नान, द स्टार्टिंग विद द ब्रीदिंग, वहां से मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है. ड्रिंकिंग वाटर, मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है. सिटिंग इन द पोस्चर, वहां से मेडिटेशन सब, द टाइम फ्रॉम यू स्टार्ट बेदिंग, वहां से मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, एंड वंस यू क्लोज द आईज, पूरा प्रोसीजर करने के बाद ऑटोमेटिकली यू गो इनटू मेडिटेशन. यू डोंट हैव टू डू, यू हैव टू गो इनटू मेडिटेशन. सो ऑटोमेटिकली यू गो इनटू मेडिटेशन. ठीक है. Any other question? Any other question you want to ask? Please ask me. Any other question? Please don't hesitate. If you want to ask me in personal also, you can ask me. I've already shared my number. Okay. So there's the herbal powder. Okay. People are suffering from diabetes and blood sugar and all that stuff. Okay, so it's amazing thing. Okay, it's very reasonable. Okay, this 4 days, it's a 4 days retreat. 17th July at 12 o'clock in the afternoon. Once you check in, we'll start with the process. On 18th, 19th and 20th, we'll start from morning 5 till night 9, 10, 11 o'clock. Okay, and it's amazing thing. Okay, don't miss this opportunity, because after that, minimum 5 to 6 months, I'll be not be taking any retreat. Of course, I'll be taking workshops though, maybe one day, but not a big retreat of 4 days or 5 days like that. So don't waste this opportunity if you really want to, do something, okay, for yourself, not for others. Okay. So any other question before we end the session? Hope so 5-6 स्टेप आपको समझ में आया है. नहीं आया है तो मुझे बाद में आप पूछ लेना. सी, मैं कितना भी अच्छा बोलता हूँ, उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी. वॉट एवर गुड आई से, दैट विल नॉट चेंज योर लाइफ until and unless you don't implement it. जब तक आप प्रैक्टिस ना करो. ओके, सो ऑफ कोर्स दे सी, आग्नेय चक्र सबसे ज्यादा कभी एक्टिवेट होता है स्टार्ट, once you are on the screen very less, the TV and the mobile screen. Okay, so the mobile screen should stop before 10:30, and by 11 o'clock you need to sleep, and before 6 o'clock you need to wake up. Okay, the more you are on the screen and the more you are awake after 11 o'clock, there is a great spiritual loss, and that spiritual energy loss will convert into your health problems. Okay, ये तो बहुत important thing है. So please समझ में आ जाओ. Before 11 o'clock you need to sleep. Before 10:30 you need to stop your mobile and laptop and the TV. Once in a while it's okay. Before 6 o'clock you need to get up and start doing your sadhanas. Okay, so this is the real thing you need to do. Just do it for 48 days and then let me know. ठीक है. भगवान ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं. ठीक है, द गॉड विल कम ऑटोमेटिकली टू यू. दे विल आस्क यू व्हाट डू यू वांट. नाउ यू आर आस्किंग टू द गॉड. God will ask you what do you want. So much power a human being has, so much power, but we don't realize it. We don't believe in ourselves. That's the problem. Okay, हम खुद पे भरोसा नहीं करते. तो please try to believe in yourself and make your life amazing. Okay, आप जब ऊपर जाओगे ना वापस, after your death, there is nothing called as death. लेकिन आपका जब शरीर जाएगा, जाओगे ना, ऊपर जाओगे ना,
तो बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि कुछ अमेजिंग करके गए धरती पे। ओके, रोना नहीं चाहिए कि ये नहीं किया वो नहीं किया। ओके, सब कुछ अमेजिंग करके गए। ओके, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। ओके, so you should be proud of yourself. Okay, so that is a life you need to live, be it your age now is 20, 30, 40, 50, 60, doesn't matter. Okay, so take care, thank you very much. And any question? I think so, no question. Super. ओके, सो प्लीज कीप practicing. एंड यस, जिन्होंने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया था ना स्टेज 1, उसका हम सेशन कर लेंगे। ओके, जिन्होंने मेरा स्टेज 1 का वर्कशॉप अटेंड किया था ना, हम नवंबर में लिए थे, अभी तक चल रहा है। Okay, I'll do a practice session again tomorrow at 9 o'clock. Okay, so I'll share you the link there. So thank you very much and see you soon next week or maybe after 3-4 days. Okay, thank you. See you soon. I'll be sharing the link of this on the YouTube by tomorrow.